Shazal Subhan this side, and today I have just recorded a video that is on how you can get million people data for free without putting a single penny in the system. And after this video, after this intro, the video is going to be started where I'm explaining every single thing to keep in mind. This is basically the crisp of the market, tools you can use, platforms that you can use, and do it by your own. It is not like something a special secret. It is available out there. It is just a phrase of what people are telling you, a structured way and an organized way. Have a great day. See you in the video, and also after watching the video, if you like it, share your thoughts in the comment section. It will just going to take you 1 or 2 seconds, and it will help me a lot. Have a great day. Bye bye. ओके सो आप सब लोगों ने इंट्रो देख चुके हो, एंड नाउ यू वांट टू नो कि किस तरह हम लोग 1 मिलियन पीपल को डाटा निकाल सकते हैं फॉर फ्री. लेट मी एक्सप्लेन. सो डाटा निकालने के 3 मेन तरीके होते हैं, ठीक है. लीड जनरेशन की, डाटा स्क्रैपिंग की, डाटा निकालने के जनरल. फर्स्ट इज यूजिंग ब्रोकर, सेकंड इज यूजिंग प्लेटफॉर्म, एंड थर्ड इज बेसिकली स्क्रैपिंग बाय योर. फर्स्ट इज ब्रोकर. आई विल नॉट प्रेफर टू गो विद दैट थिंग बिकॉज व्हाट हैपन देयर इज कि वो लोग एक ही सेम डाटा को सब लोगों को बेच देते हैं, ठीक है. उनका एक पीस ऑफ एक शीट ऑफ डाटा है एंड दे आर सेलिंग इट टू वन एजेंसी इन कैलिफोर्निया, सेकंड एजेंसी इन दिल्ली, थर्ड एजेंसी इन गुजरावाला इन पाकिस्तान. तो दैट डज नॉट मैटर बिकॉज एक ही बंदा है जो उनकी शीट के अंदर उसको 6 जगह से मैसेज जा रहे हैं, तो वो पहले फर्ज है. Next moving ahead, we have the thing which is basically using platform. Platforms are good if you are able to find a platform that is not overcharging, because right now there is a lot of platform out there, but the only problem with these platforms, they are overpriced. A lot of them are overpriced. Like Apollo, they charge $40, $49, $40 per month just for 5,000 piece of data. That is not 5,000 lead. That is not the way it works in gold outage, because we have to scale it up. What you can do if you are going with platform thing, you can find a platform which is good. For example, you can go with Cold Info. They give around 10,000 credits. You can save up to 10,000 people's data for free, and you can just create a new account and do it once again. As simple as that. Cold Info, KOLDINFO. This is the platform that you can use out there. It is basically a backup platform created by another YouTuber as well. And yeah, the third thing, ठीक है, which is basically using Apify. Apify से डाटा निकालना. अब मैं आपको बता दूँ कि Apify से डाटा निकाला कैसे जा सकता है and how all of this works. So Apify is basically a platform जहाँ पर multiple लोगों डेवलपर ने अपने स्क्रिपिंग टूल्स छोड़े हैं, ठीक है. उन्होंने अपने स्क्रैपिंग टूल्स वहाँ पे होस्ट किए हुए हैं. यू कैन जस्ट गो आउट देयर एंड यूज देम. उनका एक फ्री ट्रायल है, दिस इज बेसिकली वेरी जेनेरस फ्री ट्रायल जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा यू कैन यूज ऑफ द टूल्स, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अपोलो, ठीक है. ऑन अपोलो व्हाट वी डू इज बेसिकली स्क्रैप द डाटा. यहाँ पर भी आप डाटा स्क्रैप कर सकते हो, बट द थिंग इज जब यहाँ पे डाटा स्क्रैप कर रहे हो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की है, ठीक है, कि एपीफाई के अंदर आप उस चीज़ को बहुत मिनिमल कॉस्ट में कर सकते हो. बहुत मिनिमल कॉस्ट, लाइक literally in pennies you can scrape data up to 30,000 people's data in some pennies. Not even spend $1. ठीक है, आपने 280 रुपये भी नहीं दिए in Pakistani rupees. You don't have given out there 280 rupees and you have already get the data of 30,000 people. So this is as simple as that. There are a lot of tutorials that you can watch on how to use Apify. Now what I will prefer or what we are using right now is basically Anytime automation. जिस Anytime automation के अंदर we have two things based on, हम उसे बताते हैं कि ये हमारी ICP है, so Anytime automation में डालते हैं और बताते हैं कि ये keywords that we are targeting to. It go out there and based on our ICP and our keyword, वो देखता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है. Should I go with platforms like Cold Info, platform से डाटा स्क्रैप करना सही है या फिर Apify को यूज़ करना सही है. अगर Apify में जाए तो Apify में कहाँ से डाटा स्क्रैप करना सही है, Apollo से, Clay से, कहाँ से, ठीक है. एंड व्हाट इट डज इज बेसिकली फर्स्ट डिफाइन दैट रूल एंड देन यू Anytime के अंदर वी हैव कनेक्टेड आवर कोल्ड इन्फो, देन वी हैव कनेक्टेड Apify और ऑल द एक्टर्स दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ. हमने वहाँ पर उनको कनेक्ट किया हुआ है और वो उस चीज़ को यूज़ करके सारा डाटा निकालता है एंड इट पुट इट इन अ स्प्रेडशीट. एज सिंपल एज दैट. दिस इज बेसिकली अ सिंपल वन कि जहाँ वेयर द डाटा इज बीइंग गिवन, व्हाट इज आवर ICP, the input is basically given what is our ICP, what are the keyword that we targeting to, then the processing going to be happen. It is going to define the way that is data is being going to collect. So either it is going to collect through Cold Info platforms like Cold Info or scraping tools like Apify, and in Apify which actor is going to be used, and then using that actor it is going to scrape the data out and put it in a Google sheet that we can use later and we can just clear it up later.
So this is as simple as that. These are some of the crisp of the industry that you can use. Basically, there are mainly two main platforms. If you find code info, if you can master these, you can get unlimited piece of data out there without anything. And if you want to get my automation that we are using, just comment down below in the comment down below if you're watching this YouTube video, or in a or on a YouTube short. You can just go down there and comment down that you want that automation, and I will just reply to you and send you over the basically the automation. You can just use it by your own. And yeah, this is basically as simple as that. You can just go out there, use that automation, it will select by its own and do the outreach. I will see you in another video. I hope this is very beneficial for you, because you can just check out platforms like Epify and Coldinfo. You are able to get a lot of data. And if you want to increase your efficiency and productivity, you want to use my automation, you comment down below and I will send you over my automation as well. Have a great day. Bye bye. See you.